आउटलुक तो भैया हम रोज यूज करते हैं, बट अगर मैं आपको कहूं कि आउटलुक को मैं कोपायलट से लिंक कर दूंगा, जिससे आपको आ जाएगा मजा, और ऐसी 7 बढ़िया सी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप कोपायलट के थ्रू अपने आउटलुक में लिंक कर देंगे, तो जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट, इन दिस सेशन ऑल्सो आई एम गोना बी शेयरिंग दिस फाइल। एक फाइल मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें 7 अलग अलग यूज केसेस है जिसको हम जीरो से डिस्कस करने वाले हैं, which will be helpful to you and you will be able to get this file in the description which is there. Number 2, in this session I'll be using it out the Copilot license, which is a 365 license, and this is a enterprise license। ये एक enterprise license है, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सबसे मजेदार चीज अगर आपको पता होगा कि एवरी एआई हैज अ वन ग्रेट कंसेप्ट, एंड दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ मेमोरी। राइट, आप चाहे कोई भी एआई टूल यूज करिए, चाहे चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, क्लाउड हो, कोई भी टूल यूज करेंगे, दिस आर ऑलवेज एन कंसेप्ट ऑफ अ मेमोरी विच इज देयर। अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना बी अपडेटिंग इट्स मेमोरी एंड टेलिंग इट आउट कि सेव द वे आई ड्राफ्ट द मेल। आपको एक मैजिक दिखाता हूं एक छोटे से प्रॉम्प्ट के थ्रू। राइट, विच इज देयर, मेरे पास एक ऑलरेडी मेमोरी है, तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक मेमोरी में डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी उसमें था। Okay, now what I'll do, I'll give a simple prompt to the AI tool which is there। अब prompt देखिएगा, prompt क्या है, it has been already there in the file। मैं zoom कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप पढ़ पाए। अब प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, मैंने बोला है कि इवैल्यूएट माय ईमेल फॉर द लास्ट 2 वीक टू डिटरमाइन माय स्टाइल एंड टोन। मैंने एक छोटा सा एआई को प्रॉम्प्ट दिया और इसको कोपायलट में डाल दिया। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस कोपायलट इज एवरीथिंग इज इंटरलिंक। यू कैन टॉक टू योर टीम्स, यू कैन टॉक टू योर एनी अदर टूल्स विच इज एक्सेल, पावर पॉइंट, जिससे आपको बात करना है आप बात कर सकते हैं। सबसे मजेदार चीज कोपायलट की ये है। ठीक है, दूसरा, इफ यू आर यूजिंग एन एडवांस वर्जन जस्ट इंश्योर दैट ये वर्क आईक्यू ऑन है। वर्क आईक्यू ऑफ रखोगे तो ये अपना मेल रीड नहीं कर पाएगा, दैट इज वन थिंग। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके इसमें कुछ पुराना वर्जन है, तो यहाँ पे डिजाइन को अगर मैं ऑफ करता हूँ, इट्स पे टर्न दिस ऑफ, तो आपको ये जो है ना, तो इसको आप बोल रहे क्या फीडबैक है भैया, कोई फीडबैक नहीं, सब मीठा मीठा है ना। तो जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंट यूजर इंटरफेस व्हिच इज देयर। तो ये आपको वर्क सेक्शन में करना है। वर्क सेक्शन में क्या होगा, इट विल बी इजीली एबल टू एक्सेस द फाइल्स फ्रॉम योर टीम्स, आउटलुक एंड ऑल द अदर प्लेसेस व्हिच इज देयर। ठीक है, तो चलो हम न्यू डिजाइन में ही काम करते हैं, इंश्योर दैट आपका वर्क आईक्यू ऑन रहेगा। अब जैसे ही मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, व्हेन आई राइट दिस प्रॉम्प्ट, व्हाट इट विल डू, इट विल इवैल्यूएट माय टोन्स and it will see what type of mail I have replied and it will tell me what type of what is the tone of my reply। It will just take 10-15 seconds of time। आफ्टर दिस इज डन, ये मुझे एक टोन दे देगा कि भैया देखो ये मेल आप रिप्लाई करते हो, ऐसे ऐसे आप रिप्लाई करते हो, आपका टोन दे दिया। मैं उसको बोलूंगा भैया ये अपने मेमोरी में सेव कर ले। क्यों? बिकॉज पीपल शुड नॉट फील दैट कि ब्रो दिस मेल हैज बीन ड्राफ्टेड थ्रू एन एआई। दे शुड फील इट आउट कि भैया ये बंदे ने ही ड्राफ्ट किया है, इसका टोन डायरेक्ट है, क्लियर है और ऐसे ऐसे बात करता है। राइट, अब जैसे ही मुझे एक टोन मिल गया, एज एंड व्हेन आई गॉट द टोन, अब मैं क्या बोलूंगा इस एआई को कि अपडेट दिस इन योर मेमोरी। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं कोपायलट को यूज करूंगा व्हेन आई एम यूजिंग एन आउटलुक, तो आई गेट अ वेरी गुड रिप्लाईज फॉर द सेम। बिकॉज इन आउटलुक जहां पे भी आप जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको कोपायलट दिख रहा है विच इज देयर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इधर आप लिख देंगे अपडेट दिस इन योर मेमोरी। राइट, अगर आपको ये लिखना है तो ये लिख सकते हैं, या तो फिर अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है, तो मैंने इसको बोल दिया रिमेंबर दिस। राइट, तो ये दोनों चीज आप बोल सकते हो कि रिमेंबर दिस और अपडेट इन दिस मेमोरी। तो मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं। तो रिमेंबर द स्टाइल एंड अ टोन एनी टाइम आस्क यू ड्राफ्ट ईमेल फॉर मी इन फर्दर। तो आपका बढ़िया से ईमेल का ऑटोमेशन हो गया, और यहाँ पे देखिए आपका मेमोरी अपडेट हो चुका है। अगर आपको जाके चेक करना है, यू कैन अगेन गो हियर। राइट, एक बार मैं इधर दिखा देता हूँ, ये अपडेट हो गया होगा मेमोरी में। Right, again click on 3 dots once I'm here, click on settings। once I click on settings, right, you'll be able to see in a personalization, और आपका मेमोरी यहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट हुआ है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। देखो आ गया प्रेफर्ड ईमेल साइट विच इज देयर। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2, पहला यूज केस यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये हमको ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, वेन एवर आई एम गोइंग टू माई आउटलुक विच इज देयर, आप आउटलुक में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको टॉप राइट पे यहाँ पे आपको कोपायलट दिखेगा। अब मजेदार चीज क्या है, राइट, मुझे पता है काफी लोग को ये मेरे मेल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब माइक्रोसॉफ्ट के मेल आए हैं विच इज देयर, कुछ पेमेंट रिलेटेड है वो सब, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी उसको। ठीक है, अब जब भी आप इसको पढ़ेंगे, वेन एवर यू आर गोना बी रीडिंग द सेम आउट, यहाँ पे देयर इज अ 2 सेक्शन, वर्क एंड वेब। ये छोटा सा चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट आउट। If you want anything, or if you want the data to pull out from your within your laptop or within your server of OneDrive and everything, आप वर्क में काम करिए। राइट, अब लेट्स से है ना, मैं वर्क में काम कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ आप सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको काम चाहिए उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं विच इज देयर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन।
ऑल्दो इसको मैंने पर्सनलाइज कर दिया है, कहाँ से सर? इसको मैंने पर्सनलाइज कर दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, राइट? आई हैव ऑलरेडी पर्सनलाइज्ड आउट फ्रॉम माय सेटिंग सेक्शन। तो आप जिस हिसाब से आप मेल लिखते हैं तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं कि टोन ऐसा रहना चाहिए, ये चीज ऐसी रहनी चाहिए, तो यहाँ से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं और 365 से भी हम कर सकते हैं, विच इज दैट। ओके, नंबर 2, राइट, कोशिश करिए जब भी आप यहाँ पे यूज करें तो आप वर्क सेक्शन को यूज करें। अब मजेदार चीज, मान लीजिए आपको कोई मेल ड्राफ्ट करना है, फाइल वन ड्राइव में पड़ी है, यू कैन राइट स्लैश, राइट? जैसे आप यहाँ पे स्लैश लिखेंगे आपको फाइल भी आ जाएगी। लेट्स से आई हैव रिटन इट आउट एचआर पॉलिसी, तो पूरी एचआर पॉलिसी आ गई। और मैंने लिख दिया ड्राफ्ट अ मेल फॉर द नेक्स्ट हॉलीडे और चेक वेदर दिस पर्सन हैज टेकन अ लीव एज पर द एचआर पॉलिसी और नॉट। तो वो हर एक चीज पॉसिबल है जो आपको कर सकता है। इनफैक्ट जब आप एट द रेट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप बाकी सारे कनेक्टर से भी काम कर सकते हैं, विच इज दैट। इनफैक्ट अगर आपने कोई एजेंट बनाया है तो उसके साथ भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, विच इज दैट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस फीचर विच इज हैज बीन अवेलेबल। स्लैश प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स हैं, चीजें हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कोई टीम चैट्स है तो उससे आप बात कर सकते हैं, विच इज दैट। कोई फाइल अटैच करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप कोई पीपल है, मान लीजिए कोई पर्सन ने छुट्टी पॉलिसी के हिसाब से लिया है कि नहीं और उसने आपको छुट्टी मांगा है, तो मैंने क्या किया, स्लैश प्रेस किया, इसको एक बार बैक करिए, यहाँ पे यू विल गेट अ पीपल फाइल मीटिंग्स। अगर आपका कोई मीटिंग था तो आप मीटिंग को अटैच कर लीजिए, राइट? कोई ईमेल है, कोई चैट्स है, किसकी आपको पूरा मेल आ गया, तो मैंने डाला स्लैश दिस मेल इज दिस लीव एज पर दी /HR पॉलिसी और नॉट, है ना? फिर मैंने उसको ये बोल दिया कि भैया ये बताओ ये लीव एचआर पॉलिसी के हिसाब से कि नहीं। तो सी दिस लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज हैपनिंग एट आउटलुक विच इज देयर। ऑल्दो अब ये माइक्रोसॉफ्ट का मेल है तो एचआर पॉलिसी में आएगा नहीं, बट यस, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, यू कैन जस्ट इंटरलिंक 2-3 मेल्स, 2-3 फाइल्स। अगर आपको कोई एक्सेल फाइल डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो, विच इज देयर। तो एवरीथिंग हैज बीन पॉसिबल थ्रू दिस Copilot which has been here, okay, right? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 2-3 इंपॉर्टेंट यूज केसेस विच इज देयर, ठीक है। मैं साथ साथ में फाइल में भी दिखाते जाता हूँ, तो ये दोनों हो चुका है। नेक्स्ट, जैसे आप कोई भी मेल ओपन करते हैं, लेट्स से इफ आई ओपन दिस मेल और लेट्स से इफ आई ओपन दिस न्यू मेल which is there, तो आप कोई भी मेल खोलते हैं, the beauty of that is when you are having an advanced license of Copilot, you can summarize this mail within a fraction of seconds, राइट? आप एक सेकंड में मेल को समराइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप 365 के अंदर जाते हैं, लेट मी टेक अ न्यू चैट, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, राइट? लेट्स से आई कैन राइट इट आउट, टेल मी द emails which are most important to me where reply is pending from my end, ठीक है। तो ये मेरे को पूरे मेल को एक्सेस करके बता देगा कि भैया ये आपके 10 मेल है जो आपने रिप्लाई नहीं किया है और आपको रिप्लाई कर देना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी आप जाके चैट कर सकते हैं, राइट? व्हेन यू ओपन द Copilot, इट इटसेल्फ सेज दैट कि आप क्या क्या एक्ट और टास्क कर सकते हैं, है ना? तो यू विल बी एबल टू सी समराइज दिस ईमेल, रिप्लाई टू दिस ईमेल, यू कैन ऑल्सो डू इट आउट, व्हिच इज देयर। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो इट विल शो यू अ डिफरेंट रिजल्ट्स। व्हाट मैटर द मोस्ट इन इनबॉक्स टुडे, व्हाट ईमेल नीड्स एन अर्जेंट रिप्लाई, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया, एंड इट विल गिव यू रिजल्ट विच इज देयर। देखो यहाँ पे भी मेरे को मेल आ गया कि आशीष त्रिपाठी से आपका मेल है और इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑल द थिंग्स व्हिच हैज बीन देयर, so it is just showing you in a better manner, so you can just see it out, everything is interlinked. That's the beauty of Copilot enterprise license. Okay, now I've told you about summarization, तो आप summarize कर सकते हैं, which is there. Now comes the most important part, right? Now comes the most important part, ठीक है। तो ये of course से सर्च हो रहा है तो इसको सर्च हो जाने दीजिए, and later on of course you can come and check the same. After this is done, you can just, most important part is the settings here. ध्यान से देखेंगे please. Once you click on the settings, there's an option of a Copilot here. Now once you click on a Copilot, it will say that preferences. Copilot in Outlook helps you more efficient and summarize the long threads and blah 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 blah. तो इसको आप turn on कर दीजिए if you are using a Copilot. Number 2, I'll be happy if you prioritize the stuff. What does it mean? This is something which is very, very important. If you see my mail, there are some mails where you'll see downward arrow, some mail which is upward arrow, right? Some mail it does not have it because it is learning from my pattern and the way I am doing and using the stuff. Now what I have done, I have just prioritized and turned this setting on. तो इससे क्या होता है? So over a period of time, it is learning what type of mails always I come and check first, what type of mail usually I reply. So it will automatically put a arrow on a high priority, and automatically it will put a arrow on a low priority. So let Copilot prioritize your mail. But in fact, if you want to prioritize some mails which are relevant for you, let's say I want to prioritize a mail which is coming from my manager, so I can just set it as a high priority, which is there. Or let's say if I'm getting any of the mail from an HR, so I can prioritize the same. If someone in your team, right, is there who always troubleshoot, तो उसको आप low priority करके डाल सकते हैं, right? Or some mails are there which you just get it out from some companies or people around, so you can prioritize it as a low priority.
तो आप नाम लिख सकते हो, क्या लिखना है इसमें, एनी ईमेल फ्रॉम शिवम। तो एज एंड व्हेन एनी मेल्स कम्स फ्रॉम शिवम, तो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, देखो ये शिवम पलन आया ना, तो क्या हो गया, अपवर्ड एरो आ गया। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इट आउट गाइस, कि द वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग एंड हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड। ऑफ कोर्स यू कैन प्रायोरिटाइज दिस मेल्स, सेट इट out whatever you want to do it. Next, this is something which is very, very important where a lot of people have not done the same. Now, here you can also set up your custom instructions, guys. Now, this is something which is different from your personalization here, because your co-pilot will understand what type of tone and language you want. Okay, in fact, if you want, you can just copy the one which was given to you a few minutes back by Copilot, or what you can do is simply you can just copy the one which I'm giving out to you, which is there ki draft an email which is clear, professional, and blah 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 language, avoid short forms and blah. Right? Acha, one more thing which I just also want to tell you out. Right? When you're just copying this and writing it down, also write one more thing which is called as, which is already in part here. It says formally and em dashes. What does it says? Right, to draft an email where avoid em dashes and avoid jargon, unnecessary repetitions, only formal wording and em dashes. What is em dash? देखो, whenever you are using an AI, the problem with AI is many a times it will give you some long dashes. ऐसे एक long dash देता है, which cannot be generated manually. It can be only generated through AI. तो ऐसे दो डैश को मर्ज करके आता है. तो let's say in some of your mail, if you're getting a bigger dashes, people will get to know that this guy has generated a reply from Copilot. तो मैंने इसके clear instruction में लिख लिया, avoid EM dashes, which is something no one will tell you out, right? So we have been into this industry for now almost 2 years. I've been training a lot of companies and people around. So this has been done by a lot of people and they are very happy. You can set the word limit as well. Right, after you do the same, click the save. Once it is done, you will be updating your draft instruction ki bro ye meri instructions hai, the mail will go in this pattern. Very nice tool, very nicely you can do it out. After this is done, you can set the priority which I've told you, and the last but not least and the most important use case is a calendar instructions. Now Copilot has also an authority to update your calendars, which is there. Now let's say I click on a create instructions. Okay, so let me just go to my Outlook. It has gone into the different page which is there. Let me just close everything. Now it has said, help me set up a instruction for managing my calendar. So let's say every time you get a mail from your manager, or let's say you have to send a recurring meeting for your team on every Monday, Wednesday, and Thursday, or you want to set up a daily meeting with your team or manager, right? So you can do it out. See, it is also telling you what all things, bro, I can do it for you. Right, so that is also a good thing. So you can just read it around, what all things it can do it for you. Let's say it says that we can do an auto acceptance which is there, auto decline the meeting, auto remove the meeting which is there, and or you can say it out, right? I can just say anything like auto accept the meeting from CA Shivam Palan. Right, so automatically what it will do, it will accept the meeting when it is coming from Shivam Palan, or it will high prioritize the same which is there, or you can also say ki follow up with me twice for this meetings which is there. So all the settings can be done using an Copilot, which we are going to be doing the same. Okay, आ गया, automatically accepting the meeting from Shivam Palan if the calendar is free. Right, please reply yes to proceed. I say yes, kabul hai. Right, after I do the same, right, it is going to be changing my Copilot and it is going to be doing a very nice settings. In fact, you will be able to see the settings, whatever you have done it out. Okay, it has been done. Hang on. So now you can also go on your Copilot section and you can just check it out here. Right, review all the instructions the Copilot will do for you. तो आपने जो instructions दिए वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा. Right, so automatically you can just ask a Copilot to delete the instructions which has been given here. So try it out. These are the very interesting use cases which is there, which can save you a lot of time. In fact, when you're drafting a mail, this has been a very good feature in a Copilot. Whenever you're drafting a body or subject, right here also you can use a Copilot. Help me write the same. So you can also try it out, which is there. Right, to help me write an email for XYZ thing. So that is also a very good thing which you can draft it out, or write a email for follow up for payment. It will just draft you a very good email. In fact, you can write it out here as well. So it will just give you email which is there. Although it will take some fraction of time, but the beauty is it will write it on the tone what you're using. It will see what type of mails you have replied in the past, and it has given you the mail. Now, number two, once you are going to be here, let's say if I select anything and I want to change anything. So open Copilot. Again, it is coming here. So when I click it out here, it will open a Copilot and it will also give you an option to change the tone, make it longer, make it shorter, get a coach, right, or rewrite, auto rewrite. So all these things has been a very nice feature in a Copilot which is there. So you try it out and trust me, you'll love this. Okay.
Now, also last thing before I close this out, and of course, if you have any queries, you can just put it out in the comment section. I'll be always happy to help you out on the same. But yes, if you're someone who is from a company or corporate and looking for some specific corporate training, you can also reach out to us on shivam.p@cmong.com. You can reach out to us on the email ID which has been given to you, because we are working with a lot of companies. We have worked with Tata, we have worked with a lot of investment banks and bigger companies out here in the past, and we have helped them out to automate a lot of stuff in their companies. So if you are someone who is looking for automation in your company, do reach out to us. Happy to help you out. And if you have any queries, please put it out in the comment section. Happy to help you out as well.